Hello and welcome on our special broadcast right here on India Today. And what a day to be an Indian cricket fan. They were up against a formidable opposition in England, a team that had not lost a single game in the Super 6 stages, but it was total dominance from the Indian team. They started off well, took wickets at regular interval. 68 is what England could manage, and India chased that down with relative ease, losing just 3 wickets and with plenty of overs to spare. All right, we'll also hear in from Diana Edulji, the former Indian cricketer, and her thoughts on this particular victory. Also, we'll get to hear from the players themselves. They spoke to the media a short while ago. What were their feelings? What does this particular victory mean for them? That's also something that's coming up in the program. We'll also pick 5 best players that have been throughout this tournament that have done exceedingly well. What are their backgrounds? When did they start playing cricket? All that coming up in our program in the next 20 minutes or so. But for the moment, I'll go across to our consulting editor, Rajdeep Sardesai. Rajdeep, was it a tough choice what to watch? Because the Indian men's team was playing a bilateral game today. There was Novak Djokovic, but tell me, were you glued to the TV watching the girls perform at the World Cup final? To be honest, Nikhil, first of all, a great win for the Indian team. But I was switching channels, but I did stay with the Indian women, particularly as they were approaching that 69-run target. It's a huge moment for Indian women's cricket, Nikhil, because remember, Indian women, for all their achievements, have never really won a world title. To do that then means that you've broken a major glass ceiling, and it only reflects just the remarkable transition. This morning, Nikhil, I was just remembering, if you recall, the first IPL was played in 2008. That was the year India under-19 won the men's tournament, and the likes of Ravindra Jadeja and, of course, the great Virat Kohli came through that team. Now you've got a team where you've got the likes of Shefali Verma, you've got the likes of Richa Ghosh, all of whom have come, done the hard yards in even senior cricket and are dominating the game at the junior level. So it just shows how far Indian cricket has come. And Indian women's cricket, Nikhil, is the next big thing. You're seeing sponsors, you're seeing a women's IPL this year. There is a lot of sponsor interest. And you saw in all these young girls, I was astounded by the fielding. I thought our fielding was what really was spectacular. There were a couple of great catches, a run out. And, that to my mind suggests that Indian cricket, women's cricket, is really growing by leaps and bounds. Because if you're so good when you're under 19, there is every expectation that we will be world champions in the future, even at the senior level. So great day for Indian women's cricket and Indian cricket in general. As Rajdeep there is saying that, great day for Indian women's cricket. In fact, if you take a look at Indian cricket on the whole, you'll have the women's IPL starting this year. Diana Edulji joins us live on the program as well. Firstly, ma'am, many congratulations to you as well. Tell me, the Indian women's senior team, we've seen them reach the final stages at various World Cups, but they've always fallen that, short of that title. Do you think this could be that moment, that catalyst that can even change the fortunes of Indian senior teams? Because all it takes you is that one title and then fortune seems to change. Yes, at the outset, I would like to congratulate BCCI and the under-19 women's team on this great victory. It is wonderful finally an ICC champion trophy in our closet in the BCCI office. It is worth waiting for, and I'm glad that the under-19 team has done it for simple reason that the next month we have the seniors playing the T20 World Cup in South Africa itself. So this is something that will motivate them and, take one step more, that 2 trophies coming in within a span of 1 month, and with the Premier League, Women's Premier League round the corner, I think women's cricket can't ask for anything better. All right, incredible moment then for the Indian team, the women's team, and as ma'am is pointing out that the men's team is also going to be playing a T20 World Cup later, in 2 years' time. The women's senior team will also be playing a T20 World Cup. So all of those tournaments that are coming up, that is something that you need to keep an eye out on. So I was telling you about the 5 players, 5
big players that India have. And let's take a look at, their profile. How is it that they started their cricket? What is it that actually, got that interest going in cricket as far as their careers are concerned? So we'll take a look at some of those Indian players. One of them, as you know, is Shweta Sehrawat. She started playing cricket at a very young age, a young age of just 7 years. She comes from Delhi, the dasher from Delhi who honed a skill at the age of 7 at the prestigious Sonnet Club. Now remember, Sonnet Club is a club in Delhi that has produced many test cricketers. She dazzled the world in the Under-19 World Cup with her attacking right-handed batting. Sehrawat idolizes Smriti Mandhana and Virat Kohli. Her favorite pastime is enjoying the street food of Mumbai. She may be from Delhi, but loves the street food in Mumbai. Parshavi Chopra is the other one. She is from Bulandshahar's gem, was one of the stars of this Under-19 World Cup with a brilliant leg spin bowling. Parshavi initially wanted to become a pace bowler, honed her skill in leg spin at the age of 10. Her favorite cricketer is Yuvraj Singh. Incidentally, she trains at his academy in Greater Noida. So Yuvraj Singh's academy, that's where she trains. The other spinner on our list is Mannat Kashyap. She initially did not get any coaching when given the opportunity. Mannat Kashyap excelled in cricket. Her left-arm orthodox bowling kept India in the hunt throughout this tournament with an economy rate of under 4. Kashyap was the key in India's success. Her favorite cricketer is Harmanpreet Kaur, the Indian women's senior team's captain, and her favorite actor is Ranbir Kapoor. Gongari Trishna is the other one on our list. Now, she dominated her seniors at a very young age when she started playing cricket. Trisha, right at the age of 12, played a vital role in India's dominance. Her solid style of play was a testament to her idol, Mithali Raj. She is an elite athlete, but also loves eating pizzas. Her favorite actor is Telugu superstar Mahesh Babu. The other one who did very well in the final as well and throughout the tournament, Titus Sandhu, from the master to the apprentice, hailing from the land of her idol, Jhulan Goswami. Titus Sandhu put in a brilliant show in the final, having a bit of Ishant Sharma in her, especially her bowling style. Titus was the star for India. Her favorite food is Chinese, while her favorite movie is Perks of Being a Wallflower, starring Emma Watson. Okay, an emotional Indian captain, Shefali Verma, after that victory, and you can completely understand the pouring of emotion simply because, remember, she's played for the Indian women's senior team. She's played 2 finals. She fell short there. You know what it meant to her this time to cross the line and then be holding that World Cup trophy. A proud, proud moment for every Indian, and thanks to Shefali Verma and her team. So we heard from the players, but let's also listen in to people that were always behind them, backing them, the ones that helped them start a career in cricket. And you heard from all the players, they mentioned their families. We've got Surendra Singh joining us from Rohtak. Sanjeev joins me from Firozabad outside Sonam Yadav's house. You've got Mukul from Bulandshahr outside Parshavi Chopra's house. You've got Vishal as well outside Archana Devi's house in Unnao. Firstly, Surendra, I'll come to you. You're outside Shefali Verma, the captain's house. Did you get to see those celebrations? Did you get a chance to speak to their parents? क्या है इस वक्त वहाँ का माहौल, थोड़ा बताइए हमें। जी बिल्कुल, शेफाली वर्मा जो है रोहतक की शान आन बान है, और आज जिस तरह से अंडर जो वर्ल्ड कप जीतता है, तो जो एकेडमी है या पूरा का पूरा जश्न के माहौल में डूबा हुआ है, पूरा रोहतक डूबा। हमारे साथ शेफाली वर्मा के पिताजी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से शेफाली ने आज कैप्टनशिप में जो मुकाम वो लिया है, वर्ल्ड कप जीता है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, और मैं सारा श्रेय श्री राम नारायण क्रिकेट अकेडमी, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन, बीसीसीआई बोर्ड और ये जितने भी कोचेज हैं शेफाली के, वो सभी हकदार हैं। और इन्होंने ही इतना प्लेयर को अच्छा तैयार करके भेजा है, और बीसीसीआई बोर्ड का बहुत बहुत हकदार हूँ मैं कि भाई उन्होंने बिलीव किया। जो कैप्टनशिप थी, और कैप्टनशिप में बेटी ने वर्ल्ड कप लाई है, तो मैं यही चाहूँगा कि एक धोनी तो हो गई, और अगले मंथ जो सीनियर का भी है वर्ल्ड कप, वो भी अपना इंडिया में ही आए, वो बहुत अच्छा। कितनी उम्मीद थी इस मैच से आपको? बहुत उम्मीदें थी, और बहुत उम्मीदें थी, और उम्मीद के मुताबिक ही हमारी कल बात भी हुई थी। तो मैंने बताया था बेटी को कि भाई बॉलिंग में अपना बता के चलना है, बॉलर को कैसे क्या सिचुएशन करनी है,
और बैटिंग में थोड़ा धैर्य से काम लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यही बोला था, पहले 30-40 रन का ही था कि बन जाएंगे आराम से, तो फिर टीम जीत जाएगी। तो वही हुआ, टीम वर्क हुआ, सबसे बड़ी बात है। टीम सारी ने मिलकर अच्छा काम किया। जी, श्री राम एकेडमी जो क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं, उनके ऑनर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से आज सफाली का मैच रहा, किस तरह देखते हैं? ये बहुत अच्छा लगा, और आगे भी हमारे को उम्मीद है यार, उसके ऊपर विश्वास है कि वो ऐसे ही खेलती रहेगी फ्रीली और नेचुरल। तो उसका टीम है यार। आज स्पेशली जैसे इसकी कैप्टनशिप में यार, जो कैप्टनशिप रही है आज की, बॉलिंग चेंज और सारी चीज जैसे इन्होंने बताया कि बहुत अच्छी रही। तो 8 साल की उम्र में वो क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, और उसमें आज इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। और जिस तरह से बच्ची शुरू से क्रिकेट आपके पास खेलना मैं चाहती आता थी, हूं, मैं आपके पास आता हूं सुरेंद्र, क्योंकि हमारे साथ ढेर सारे और रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं। वीव गॉट आवर रिपोर्टर्स एवरीवेयर, अबाउट 4 or 5 प्लेयर्स एट देयर हाउसेस. We've got Mukul from Bulandshahr outside Parshvi Chopra's house, another star. Mukul, आप बताएं, बात हुई आपकी किसी भी परिवार वालों से? साथ पाशवी के मदर, फादर और उनके फैमिली के लगभग 40-50 मेंबर हैं जो पहले से ही तैयार थे, और उनको मालूम था, उनको अनुमान पूरा था कि 100% भारतीय शक्ति ही, भारतीय महिला शक्ति, भारतीय युवा शक्ति ही इस अंडर 19 मैच को जीतेगी। मेरे साथ उनकी मदर हैं, उनके फादर हैं। अभी बात कराता हूं आपकी। मेरा नाम शीतल चोपड़ा है। आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए कि हमारी इंडिया जीती है। हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि हमारी इंडिया ही जीतेगी। एक पल के लिए भी हमें कहीं भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि हमारी इंडिया नहीं जीतेगी। हम पूरे कॉन्फिडेंट थे कि इंडिया ही जीतेगी। कैसे सेलिब्रेशन किया आपने? बहुत बहुत सेलिब्रेशन किया है हमने, बहुत नाचे हैं, बहुत जश्न का माहौल है। हम सारा परिवार इकट्ठा होके जश्न मना रहे हैं आज। जी, देखो कैमरे पे देखो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकुल जी, वहाँ से, और बताने के लिए उनकी घर में इस वक्त जैसे हमने सुना कि पूरी तरह से तैयार थे खेलने के लिए और किस जोश के साथ वो उतरे. We've also got Rahul Gautam now, who spoke to the parents of Shweta Sherawat, a Delhiite who's also a dasher just like Shefali Verma. Let's listen into what her parents had to say. महिला क्रिकेट टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप को जीतकर इतिहास रच दिया है. पहला वर्ल्ड कप था और वो भारत की झोली में आया है. मैं मौजूद हूँ श्वेता शेरावत के घर पर और मेरे साथ में उनका पूरा परिवार है. यहाँ पर लड्डू बटे, खुशियां मनी थोड़ी देर पहले जब भारत की झोली में ये वर्ल्ड कप आया. मेरे साथ संजय शेरावत हैं, एक प्राइवेट बिजनेसमैन है. कितनी खुशी है आपको कि आपकी बेटी उस विनिंग टीम में थी जो भारत का इनॉग्रल वर्ल्ड कप लेकर आ रही है T20 का? सर, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती कि हमारा बच्चा भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थी. शी इज़ द वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, और सबसे अच्छी बात है कि उसने अपना बेस्ट दिया है इस टूर्नामेंट के अंदर, और आई थिंक शी इज़ द लीडिंग स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट. तो इससे ज़्यादा प्रीशियस मोमेंट मतलब मेरे लिए तो कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने उसको, मेरी फैमिली ने, इवन माई वाइफ ऑल्सो, जो हमने उसका 10 साल हो गए करीब उसको क्रिकेट सीखते हुए. नाउ शी इज़ 18 years old. तो काफ़ी कुछ हमने उसके साथ बियर किया है, देखा है खेलते हुए उसको, छोटे से बड़े होते तक. मतलब इट्स अ ब्रिलियंट आपके एब्सोल्युटली. तो ये जो कहते हैं कि हमारी छोरी की तो छोरों से कम नहीं है, साबित कर दिया आप ये कह रहे हैं? ऑब्वियसली ये तो अब जग जाहिर है, कोई भी बोलेगा इस बात को. तो ये तो खैर डायलॉग वाली बात है, बट इट्स गुड फॉर गर्ल्स. अच्छा, बचपन से उनको शौक था या अभी रिसेंट में आपने कहा है कि पिछले 10 साल से वो खेल रही थी? बचपन से ही मतलब वो स्पोर्ट्स में थे? हाँ जी, बचपन से ही. इवन 8 years old जब उसने क्रिकेट स्टार्ट किया था. माई एल्डर डॉटर जो ये है स्वाति, इसने पहले स्टार्ट किया था क्रिकेट खेलना, एंड देन इसको उसने फॉलो किया, एंड शी टुक ए साइंस आफ्टर 10th, और
इसने स्ट्रीम ही चेंज कर दी थी। स्वाति, आप भी स्पोर्ट्स वुमेन हैं, घर में माहौल है स्पोर्ट्स का, आपकी फैमिली सपोर्ट करती है कि आप आगे जाएं? Definitely. I mean, should I hear this? Okay. So yeah, my family has been always supportive. I mean, कभी भी ऐसा नहीं था कि मेरी मॉम ने रोका हो या मेरे पापा ने रोका हो. Okay, from New Delhi, we're going to take you to Firozabad. Joining us from there, Sudhir. Right now, you were listening to Shweta Sherawat's parents' incredible story about that young girl who, when she started playing cricket, nobody had confidence in her, but her family really backed her, and now she's the vice captain of this World Cup winning team. I'm taking you across to Firozabad to our correspondent Sudhir. He's with Sonam Yadav and the family. सुधीर जी बताइए कैसे वहां पे जश्न का माहौल है? जश्न का माहौल तो इस कदर है। दरअसल मैं एक चीज और यहाँ बताऊं, सोनम यादव जो रहती हैं वो बहुत टिपिकल देहात एरिया है और 10 बाई 10 के कमरे में पूरा परिवार रहता है, जहाँ 5 बहनें, 1 भाई और माता पिता इसमें रहते हैं। इतने अभाव में सोनम ने और देश में इतना परचम लहराया है। मेरे साथ सोनम के भाई हैं जो मेंटर हैं, उनके बड़े भाई हैं और ये भी लोकल स्तर पर क्रिकेट खेलते थे। आइए सीधे इनसे जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ मैं बता दूं, सोनम यादव के जो फादर है मेरे साथ है, मुकेश यादव, ये एक मजदूरी करते हैं और जब इनको ये लगा कि बेटी को पढ़ाने के लिए और उसको खेल में आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत है, तो इन्होंने डबल टाइम डबल शिफ्ट में काम किया, तब यहाँ तक पहुंचे। आइए सीधे बात करते हैं। अमन यादव, कैसे आपने अपनी बहन को इतने ऊंचे लेवल पे पहुंचाया और क्या उसके अंदर जज्बा था और किस खिलाड़ी से वो प्रेरित थी? मेरे तीनों सवाल का जवाब एक ही बार में दें आप। मेहनती तो वो शुरू से ही थी और देखा साथ खेलती थी तो लगा हमें कुछ कर सकती है, तो हमने उसे एकेडमी ज्वाइन कराई, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एकेडमी, जिसके कोच हैं रवि यादव। उन्होंने उसे ट्रेंड किया और वहां से उसने जडेजा को फॉलो करती है, जडेजा को मानती है, सारी वीडियोस देखती है उसकी, उन्हीं को फॉलो करती है। जब 12 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना सोनम यादव ने शुरू किया, तब बच्चे सोचते ही नहीं है। और जहां मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, देहात एरिया में लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाते। आखिर आपने ऐसा क्या किया कि बेटी आपकी बढ़ के आई और 4 साल की निरंतर उसने प्रैक्टिस करी, लेफ्ट आर्म से स्पिन किया और आज भी उसने 7 बॉल पे 3 रन देके 1 विकेट भी लिया है। हाँ, मेहनती तो है वो और बहुत अच्छी बॉलर है, ऐसा नहीं। लेफ्ट आर्म मैं कहूंगा अंडर 19 की चैलेंजर ट्रॉफी में टॉप रही थी और ट्राई सीरीज हुई थी बांग्लादेश से, बहुत से अफ्रीका से और वेस्ट इंडीज से, उसमें भी उसको टॉप रही थी और न्यूजीलैंड से भी उसका अच्छा रहा। लेकिन जो वर्ल्ड कप उस तरीके से नहीं घटा जिस तरीके से वो मान चाहती थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा किया उसने, जो उसका था उसने 100% दिया। निखिल मेरे साथ सोनम के पिताजी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मुकेश जी, आप एक कांच के कारखाने में मजदूरी करते, तो कैसे बेटी को इतना आपने आगे बढ़ा दिया? काम करता था लेकिन बढ़ाया गया, उसके भाई ने मेहनत की, मैंने भी मेहनत की, 2 शिफ्टों में काम किया। Okay, that was Sudhir, our correspondent, reporting from Firozabad. Incredible story of Sonam Yadav as well, someone who idolizes Ravindra Jadeja. And remember, Ravindra Jadeja also first came into limelight at the Under-19 World Cup. Maybe Sonam Yadav goes on to does well for India just as idol Jadeja. Jay Shah, the BCCI secretary, tweeted to say he'd like to invite the entire team to come and watch the third T20I in Ahmedabad, and they would like to honor the winners. This is, of course, before the final, what he said, wishing the team. But after the final, he's invited actually the entire team to come to Ahmedabad to witness that T20 game between India and New Zealand. And that's where the BCCI would also like to honor the World Cup winning team. Just a few numbers before I wrap up. 8th Indian captain to be lifting a World Cup. That's Shefali Verma, the 6th at the Under-19 level. Enjoy this. Thanks so much for watching. That's all that we have for you at the moment in this special.